or strategy adapted for rural development projects. This is not a procurement method. This is not a selection method. This is an approach to facilitate the community to get empowered, to release, to get the public funds and implement project activities. So in IFAD portfolio, community participation procurement is allowed with certain threshold value. Because you can't give the entire, you have to look at the capacity of the community, what is the works or goods, what is required to be done at the community level. So at the time of design, an assessment is made. What is the capacity of the community? If it is a sequel project or a phase 2 project, we will have that data. The previous project, what was the community has done, how much funds have gone into, what is their governance structure. All these things we will look at it into the design, and we agree with the government, yes, community can be used as an implementing partner. So what is the definition of the, so this is for community participation procurement, IFAD, we don't have a formal guideline. Since it is a approach, we don't have a legal, like your IFAD procurement guidelines है, goods है, works है, consultancy services है, उसमें established process है. अगर goods works आप इंडिया में करना है और कंबोडिया में करना है और सूडान में करना है, same process है. But community procurement guidelines में there is a context involved, country-wise context or local region-wise context. So that's why IFAD is unable to prepare anything standard template for community procurement. So community procurement within the country level, country portfolio, we suggested this, we circulated to all the projects, and the project will make modifications as per this one. What we are showing you is what we sent to Orissa. More or less similar. We also shared the same guidelines with you in this one. You review those guidelines, and wherever possible, you can make a modifications. And threshold is up to that threshold what you have in the LTP. You can $10,000, normally we provide up to $10,000 threshold for the community procurement. If the project wishes, you can fix a lower limit for the community, depending upon their adaptive capacity, depending upon the availability of suppliers, depending on how they are going to source it, the type of activities. If you want to reduce, you can reduce. Or if you want to keep it up to $10,000 equivalent, no problem. Can we increase also? No. Threshold level, then what is in the procurement arrangement letter, that will be what this way. $10,000 is 8 lakhs. कलेक्शन सेंटर की वजह से देख रहे हैं ना, वो उनका कम्युनिटी का Let's see. बाकी तो नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, या तो हम स्पेसिफिक कर सकते हैं एक दो चीजों के लिए. No, for collection center, the DPM also do the contract. No, not necessarily the community has to do. कम्युनिटी लेवल पे बनेंगे तो इजीली बन जाएंगे, वो तो बनाने में बड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, नंबर बहुत ज़्यादा है. अब कम्युनिटी खुद से बना लेती है, हमारे पास एक्सपीरियंस रहा है, वो कर लेती है इजीली इसका. और ये है कि कैन वी हैव टू थ्रेशोल्ड, वन फॉर स्किल और टू टाइप. That may not be possible. But let's discuss on that. उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता सर, जैसे हमने हमारा ईंट खरीदनी है, सीमेंट खरीदना है, उसका अलग कर दिया, और जो लेबर्स का है उसका अलग, जो मस्टोड बनेगा
एक ही कम्युनिटी परमिट का ग्रांट तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट से जाओ ये पेमेंट तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर में से जाएगा सैंक्शन से फिर उसको 12 लाख तक बढ़ाना पड़ेगा। नहीं कम्युनिटी उसको आउटसोर्स नहीं करती ना, आगे किसी को देती नहीं है, खुद बनाते हो खुद से See, if they want to engage a contractor, they can also do. वो तो That's up to the community. मस्ट रोल तो करते हैं ना उस काम को। That's what I'm saying. See, if community participation procurement at the community level, only there are two methods available to them. Either direct contracting or shopping. Don't expect the community to do a tender at the village level. It is not possible. Even if you insist, it will be a farce. Nobody is going to do that. So the community participation, the idea or strategy of the community participation procurement is to minimize the documentation while retaining the principles of procurement. Transparency, competition, value for money, all the principles will still apply to the community participation procurement. The only thing is the rigor and the documentation part will be reduced. But sir, major documents should also be prepared. जो मुख्य दस्तावेज हैं कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट में उनको तो रिटेन करना ही करना है। इसको तो मतलब जो कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट में जो मुख्य दस्तावेज हैं मिनिमाइज तो करना है डॉक्यूमेंट, लेकिन ऑडिट पर्पस से जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको तो तैयार करवाना वो तो रखना है। ये डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन सजेस्ट करके प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, every time they need to have that documentation. And also there is compliance. These community procurement will have to be audited every year. Your auditor has to go and certify, yes, they have done this procurement as per the mother's one. So by definition, a community organization is a legally registered or informal grouping. SHG is also a community organization, but there is no registration for SHG. So it is an informal grouping. There may be a farmer interest group. That is not a registered one. But in your case, the livelihood collectives may be registered or may not be registered. Your CLF is registered. So anything, a community managed institution is called a community organization. So there is no particular PowerPoint or something. So what I am going through the guidelines so that I'll show you the guidelines and we can discuss what are the essential issues of the community procurement. So these are the principles of the community procurement. Like what I said, planning is important, what they are supposed to do in a particular implementation period. Planning is involved. Value for money, this is the primary principle at the community level. Whether it gives value for money to the public funds being routed through community organization. That is the value for money is the primary principle in the community world. Then improving social and economic objective, that is also because once they start handling public funds, they gain confidence and their governance structure improves so that they will, as a last mile delivery, they can access more government funds to improve the social and economic objectives. Because then always, whatever the government, state government or this one, the last mile delivery is lacking. So that gap is filled by the community organization. If the community organizations are strengthened and governed
managed by the community itself, the government will have a confidence to route the public funds as a last mile delivery through them. Integrity and accountability. It is not that community procurement कर दिया था उनका कोई accountability नहीं है. The community organization is accountable for the public funds they receive. The same principle, all other principles will apply here as well. Working together to achieve outcomes. All the community members, they come together to do a particular activity so that their social economic being or the outcome, what the outcome envisages for the project, it is done. Transparency and the social audit. Earlier, we recommended only social audit. When we started preparing this, when me and Dr. Garg, we put in our ideas to put in this, the community procurement guideline, we put in only social audit. But now, annual audit of the community procurement is mandatory. We have put it into the LTP and also we will put it into the procurement arrangements later. It can be your external auditor. Either you can do a separate community organizations audit by engaging a private chartered accountant, or your external auditor, you can expand the TOR of the external auditor to look into the community organization board. So these are the planning steps, how to do the planning. Many of them you are aware, so I don't have to delve too much into this. What is the planning process at the community level? Identify activity, what is the quantity, whether the budget has been transferred to the CBO, that is community-based organization, timeline for completing the activity, how many members will benefit, because this will go into your Yamani database. How many members benefit out of this activity? What is required to complete the activity, whether it is construction or planting of material or any other activity, agriculture activity, horticulture activity or watershed activity. Who will be the users? What help is required from the program? इसमें सर जैसे कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट में कम्युनिटी नहीं सारा वो सब लोग रिमोट एरिया में सब लोग हैं और वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वहाँ सोर्स ऑफ सप्लाई बड़ा मुश्किल है। सोर्स ऑफ सप्लाई वेंडर बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, तो उस केस में कई बार उनको टीम मिनिमम जो होता है जो RFQ में जब मैक्सिमम जाएंगे टीम भी मिलना बड़ा मुश्किल है कई केसेस। मैंने कब बोला है? नहीं फिर आपको ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला है, नहीं मैंने बोला है 2 methods available for community, one direct, ओके दूसरा शॉपिंग। नहीं उसमें आईफेड के केस तक तो नहीं जाना होगा उस केस में। किसका? सिंगल सोर्स वाला आईफेड वाला तो नहीं लगेगा ना। मैंने बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है ना। दो ही मेथड ओके Community procurement will not come for effort prior review because the threshold level is not there. Community would, because you need to have an agreement with the community organization. That is design selection में ये community organization identify हो गया. Community participation procurement by default, it can only direct contracting or shopping. क्योंकि value is low for each of the community activity, the value is low. Single source अगर वो वाला 50,000 का single source के लिए आप notice में डालोगे, अगर आपका CBO is 800 CBOs, then हमारा notice का software will be clocked by only by 800. And I don't have the time to look at it 800 dossier. As you know, each dossier has 5 or 6 workflow.
वो नहीं हो सकता क्योंकि आपका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल वो वहां से आप लेके आओगे। अगर मान लो मैं पूछ भी लिया कोई क्लैरिफिकेशन, फिर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के भेजोगे, फिर वहां से आएगा। सो साल भर तक ये एक्टिविटी होगा ही नहीं। ठीक So any community single source at the community level will not come to effect for prior review. We will post review, definitely we will post review. Mandatorily we will select samples and we will go there, we will review, but not prior. Prior review में नहीं हो, possibly नहीं। एनुअल ऑडिट यू आर सेइंग कि मैंडेटरी है, हाँ। तो अब एसएचजी का केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइवलीहुड कलेक्टिव का तो होगा ही होगा, डेफिनेटली एनुअल ऑडिट होता ही होगा। एसएचजी का कोई मैंडेटरी नहीं है। एसएचजी को दे ही नहीं रहे, ईजी एसएचजी को फंड ही नहीं दे रहे। एक कल को और आप कोई एक्टिविटी को ग्रांट तो दे सकते हो ना किसी काम के लिए। किसका? एसएचजी को तो डायरेक्ट नहीं दे सकते। एसएचजी से क्यों नहीं? नहीं, तीन चार एक साथ सवाल मत पूछो, एक सवाल पूछो क्या है, so that I can understand the question. नहीं, हम इधर है कि एसएचजी तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो द ग्रांट डोंट गोस टू एसएचजी ना, हाँ। ग्रांट गोस टू एलसी। हाँ। तो फिर एसएचजी का ऑडिट करने का कोई मतलब ही नहीं होता, हम तो ऑडिट एलसी का करेंगे ना। एसएचजी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ग्रांट आप एसएचजी कर दे रहे हो, ये इधर एसएचजी डज द ऑडिट एंड गिव इट टू यू और यू डू द ऑडिट ऑफ द एसएचजी। ओके हाँ, तो ये हाँ जी, यू डू द ऑडिट, दैट्स व्हाट आई सेड। आप अपने रीप का एक्सटर्नल ऑडिटर का आप बोल सकते हैं ये वाला इनका भी ऑडिट करा कर मैं दे दूं, और आपका वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर ज्यादा है 500, 600, 300 उस तरीके से है, then you can also engage a different auditor to do only community organization audit, only related to their audit, particular reference to the community participation procurement. Your internal auditor, REAP का internal auditor हर quarter के जाएंगे उसमें, so within each quarter they can select a particular sample. 25% of the CBO will be taken in the first quarter, 30% in the next quarter. So that audit arrangements, what is possible, वो आप decide कर सकते हो, लेकिन audit करना ही जरूरी है। अगर वो खुद करके आपका देंगे, आप उनके लिए कर रहे हो, that is your call. हमें चाहिए ऑडिटर। दूसरा सर इसकी हैंडबुक मिलेगी ना उनको, क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट इसके कोई हैंडबुक नहीं, ये गाइडलाइन है, ये आपको द्वारा ये पढ़ के समझ के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप उसको मॉडिफाई करा के आप फाइनलाइज कर दो पीएमए लेवल पे, फिर आप इसको ट्रांसलेट करके उनको एक बार जब ये दे रहे हो, इट इज नॉट दैट आप उनका 4 पेज 10 पेज के उनको पकड़ा के आपने छोड़ दिए, वो बताना पड़ेगा क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या उन्होंने करना है। क्योंकि सर हमारे यहाँ ज्यादातर कार्य जो है सीएलएफ और लाइवलीहुड कलेक्टिव्स के थ्रू ही हुए हैं। ऐसे जी चूंकि लाइवलीहुड कलेक्टिव और जो हमारी सीएलएफ है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन रजिस्टर्ड पंजीकृत समितियां हैं सीबीओस, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। एसएचजी लेवल पे एक्टिविटी परमानेंट तो रजिस्टर्ड हो ना हो, रजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड माने ऑडिट करना है, that audit is financial statements भी है और परफॉर्मेंस भी है। हम ये वाला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट का कह रहे हैं, it is mostly on the performance audit, whether they are complying to the whatever the guideline you have agreed to, you have finalized, अगर वो उस गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, उनका ट्रांसपेरेंसी कैसे है, that type of an audit, whether that can go registered, unregistered, informal grouping, anything it can go. If the project funds community organization के लिए जा रही है, then audit करना अनिवार्य है। अच्छा, वो ऑलरेडी उनका एक ऑडिट होता है जो रजिस्टर्ड बॉडी हमारी, जैसे हमारी पिछली एलसी वो हमने कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइन में दी, और उनका हर साल ऑडिट होता है, तो दैट को अपने एजीएम में रखते हैं कि आपने पिछली बार क्या किया। और जो पीयर प्रेशर है कम्युनिटी लेवल पे वो इतना रहता है कि वो गलत काम करते नहीं। वो दूसरी चीज है कि कई जगह होता है नहीं, वो आप वो वाला जो लेकिन मैं ऐसे आप तक आप में गलत काम करते ही नहीं है करके आप ये मत कहो। नहीं मैं ये नहीं कर ये जो जनरल स्टेटमेंट आप मत दो, मैं आप ये वाले जनरल स्टेटमेंट के लिए मैं 4 एग्जांपल में दे सकता हूँ कम्युनिटी लेवल पे क्या हुआ।
नहीं वो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक peer pressure रहता है। That is why we said social audit. Social audit. Social audit में आप सही कह रहे हैं। Within the village में जब ये वाला पूरा decision किस तरीके से लिया, किससे लिया, कौन सा लीड फार्मर से लिया करके प्रेजेंट करेंगे, कम्युनिटी देखेगी उनका बोलेंगे ये वाला है तो ये रेंटल ये तो पूरा साल के लिए तो ये तो 1000 रुपये आपने कहाँ से 3000 रुपये चार्ज कर रहे हो। दैट इज द सोशल ऑडिट। दैट इज द सोशल ऑडिट। ठीक है, अब उसके 3 ऑडिट होंगे, एक इंटरनल ऑडिट होगा जो हमारी तरफ से होगा और जो हम रखेंगे। नहीं, इंटरनल ऑडिट देखो, इंटरनल ऑडिट अगर आप करना चाहते हो वो अलग चीज है। इंटरनल ऑडिट इज फॉर पीएमयू एंड डीपीएमयू। अलॉन्ग द इंटरनल ऑडिट, क्यों इंटरनल ऑडिट हम कराने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर रीप्स इंटरनल ऑडिटर। एक तरह से वो एक इंडिपेंडेंस है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी और वो डिविजन ऑफ ये वाला आएंगे, जब जाएंगे उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको वहां भी ठीक करा सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर का काम ये नहीं है खाली ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसकी वहां उनका सही करवाना भी इंटरनल ऑडिटर का काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट भी इंटरनल ऑडिटर का काम है। एक्सटर्नल ऑडिटर खाली कमेंट्स देके, ऑब्जर्वेशन देके, पैरा ऑब्जर्वेशन देंगे, वो आपका ठीक नहीं कराएंगे। क्वेश्चन उनका था कि जैसे हम लोग की सारी सहकारिता है और उनका एनुअल ऑडिट होता है, ठीक है ना? ठीक है। अगर उसका ऑलरेडी एनुअल ऑडिट होता है तो क्या अलग से ऑडिट कराना जरूरी है? ये मैं कह रहा हूँ उनका सेपरेट ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होती है। ठीक है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑडिट का, बात कर रहे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट का रेफरेंस लेके। अगर आप उनका जो एनुअल ऑडिट है उसमें वो ऑडिटर ये वाला प्रोक्योरमेंट का भी देख के गाइडलाइंस देख के कंप्लेन कर रहे हैं करके उन्होंने अगर सर्टिफाई कर दिया, कर रहे हैं, तैयार है उनका टीम वर्क के हिसाब से, फाइन, यू डोंट हैव टू डू द ऑडिट, टेक दैट ऑडिट एंड यू आर डन। क्यों हम ऑडिट मांग रहे हैं? दैट यू सी द पर्पस व्हाई वी वांट द ऑडिट, सो दैट द फंड्स आर गोइंग टू अ लोअर लेवल। अगर एक्टिविटी सही हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, बिकॉज लॉट ऑफ फंड्स आर गोइंग टू द कम्युनिटी, वेदर इट इज बीइंग करेक्टली डन। उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई सप्लायर उनका सही तरह से उनका, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया था, दे आर नॉट एबल टू, अगर कोई इसमें डिफेक्ट्स है, द कम्युनिटी वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व दोस इश्यूज विद द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर कम्युनिटी की बात नहीं मानेगी। कई बार एक बार सप्लाई करके वो चले गए, देहरादून चले गए, दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, वो दोबारा आएंगे नहीं। So those cases can be flagged, then you can take a corrective action for that. और ऑडिट में सिर्फ उन्हीं का कराना है जिनको हम फंड देंगे प्रोक्योरमेंट, सबका तो नहीं करेंगे। जिनको फंड दिया जा रहा है उन्हीं का तो करेंगे। Of course. जिस साल में जिसको फंड देंगे उस साल में उसका ऑडिट, पैसे का ऑडिट होंगे, हमने पैसा दिया वो यूज हुआ सही उसका होगा। देखो 7 साल का आपका प्रोजेक्ट है, हर साल आपको नहीं देंगे करके कर लिया, डेसिजन कर लिया आपने। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कि कहाँ जाएगा कहीं नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं। हाँ, जब जब पैसा जाता है उसका लिए हम निकाल देंगे भी, ऑडिट के लिए दे देंगे करने के लिए। आप कर सकते हो, बट इफ यू हैव द डेटा, हाँ इस साल में इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया है, बट then you have to be very careful in that. जिसका वहां जा रहा है वो ही ऑडिट करना, that's a good point, but you need to have a data, उसमें ना कोई किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ना छूटे। नहीं छूटेगा, कोई पैसा तो यहीं से जाएगा ना, फंड तो डीएसपी या पीएम से जाएगा। आप तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे नहीं ना, आप तो मैं प्रोक्योरमेंट नहीं देखेंगे, देखूंगा, मैं तो एज ए आप तो प्रोक्योरमेंट देखेंगे ना, मैं सर एज ए तो जोशी जी का काम है, आप तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, आप तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, डिविजनल रिस्पांसिबिलिटी में मैं तो सर एज ए ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, जहां जा रही है वो वाला ऑडिट करो,
वहाँ नहीं, जब फंड ही नहीं है तो फंड नहीं जा रही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रही है, अभी क्यों ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत है? बहुत ज्यादा है। ऑडिट का स्क्रीन करना पड़ेगा, सैलरी तो हम सबको देंगे। See what community level पे क्या procurement का need है? Either it can be your planting material or seeds or animals, piggery हो सकता है, cattle हो सकता है, horse हो सकता है, जो भी community इसमें animals और small construction material. These are the three major things they need at the community level. जैसे आप बताया थे, कोई कलेक्शन सेंटर बनवाना है, कोई शेड बनवाना है, मार्केटिंग शेड बनवाना है, और कुछ वाटर शेड, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ चैनल बनवाना है. So these are the works they are going to do that at the community level. Normally community level पे only goods and works are involved in the community participation procurement. Consultancy services, very rare at the community level. But possible, they can engage somebody, if they want the community, engage some individual consultant to support them for some of the technical assistance or agricultural activity. That is possible. Then that will also go into the same direct contracting or this one. अच्छा, उसमें भी आईफेड के मतलब प्रायर रिव्यू की जरूरत नहीं नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में अब सब चीजें कम्युनिटी द्वारा बता रहा हूँ, नहीं कैलाश जी वो वाला वैलिड क्वेश्चन है, क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, क्लैरिफाई कर देंगे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट में IFAD का प्रायर रिव्यू नहीं है, इट इज ओनली पोस्ट रिव्यू. अगर वो कम्युनिटी आपका LC, CLF जो भी है सिंगल सोर्स भी करेंगे, IFAD का प्रायर रिव्यू IFAD के पास नहीं आएगी, इवन PMU के पास भी नहीं आएगी, DPMU के पास भी नहीं है. Community is empowered. That's why we are giving them the powers to do $10,000. DPM का हम देन पावर नहीं दे रहे हैं. As per your interest, DPM लेवल पे 2 लाख का है, कम्युनिटी का 8 लाख का है. IFAD का प्रायर रिव्यू में नहीं आएगा. Satisfied? और प्रोक्योरमेंट रूल तो वही लगी हुई है पार्टी Principles, right? There is difference. Principles और वो process दोनों अलग है. Principles क्या है procurement का? Principles क्या है? Transparent होना चाहिए, competition होना चाहिए, wherever possible competition, value for money, ethics, value for money. वो वाला प्रिंसिपल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट में भी वो फॉलो होगी, प्रिंसिपल्स फॉलो होगी. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखते हैं ना, जस्टिस, लिबर्टी, वो प्रिंसिपल है, वो वाला प्रिंसिपल यहाँ भी है. एथिक्स है, वैल्यू फॉर मनी है, कंपटीशन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए, किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, वो सारा प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लीकेबल होंगे. लेकिन ये 2 दिन से हम बात कर रहे थे, जो बिड में ये वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो वाला प्रोसेसिंग कम्युनिटी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका क्षमता है ही नहीं. जब PMU, DPMU के लेवल पे ही प्रॉब्लम आ रही है, बिड डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन इमेजिन व्हाई यू वांट टू कम्युनिटी लेवल के लिए क्यों इतना बड़ा 150 पेज का बिड डॉक्यूमेंट देखना चाहते.
तो वहाँ पर भी ये 2-3 लोगों की हमको जॉइंट बना देते कम्युनिटी में, 2-3 लोगों पे इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कमेटी टाइप का एक बनाना पड़ेगा। आ रहा अब जब मत किया ब्रदर, आप एडवांस डिग्री में हो। See, these are the need assessment template. This they can fill it out. ये है this अगर source of supply क्या है, कहाँ से लेंगे need assessment में source of supply क्या है, they can get it from the government nursery, seed corporation or cooperative, private nursery और कोई progressive farmer है, उनसे भी ले सकते हैं। source of supply क्या बजट है, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? सर इसमें जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, मान लो कि सर कम्युनिटी प्रोक्योर किया है समथिंग लाइक लाइफस्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज, लाइफस्टॉक गुड प्रोक्योर किया है फ्रॉम द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, तो वहाँ पे सर इशू होता है जो एक्सटर्नल ऑडिटर और जो सर इंटरनल ऑडिटर होते हैं सर, जो ऑडिट करने के लिए जाते हैं वो, सो दे आर आस्किंग फॉर द जीएसटी बिल काइंड ऑफ थिंग सर, so which is not possible also to provide them आप अपने इंटरनल ऑडिटर को बता दो। बहुत बार बताया है। नहीं ऑलरेडी So they are making problem. आप उनका ऑडिटर का पहले आप ब्रीफिंग नहीं करते हैं। लोकल मार्केट में कहाँ नहीं, जो आपका जो इंटरनल ऑडिटर भी है, आप उनका ब्रीफिंग नहीं करते हैं, नहीं सर, क्योंकि briefing होता जीएसटी है। रूल्स में भी एक जीएसटी इनवॉइस होती है, दूसरा बिना जीएसटी का एक कंपोजिशन स्कीम भी होता है, कंपोजिशन स्कीम भी होती है। It is not required every time they need to have a GST invoice. वो उनका ऑडिटर को भी खुद पता होना चाहिए। आप ब्रीफ करो, अगर वो ऑब्जर्वेशन लिख के दे रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर लिख के दे रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर लिख के दिया नहीं, इंटरनल ऑडिटर है ना, इंटरनल ऑडिटर को बोलो मुझे जीएसटी इनवॉइस लेके आकर, आप गाड़ी अरेंज किए है, गाड़ी जा रहे हो ना, इंटरनल ऑडिटर टीम को बोलो आप यहाँ से लंच घाट से आप वहां तक गए, गाड़ी अरेंज करके गए, यू गिव मी द जीएसटी इनवॉइस। आप बोलो अरे नहीं तो आपका पेमेंट रुकेंगे, जीएसटी इनवॉइस नहीं है करके पेमेंट रुकेंगे, बताओ। They are making problem. प्रॉब्लम नहीं है, इट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप उनका सफिशिएंटली आप ब्रीफ करो। ये अगर कम्युनिटी अगर ये इवन कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट में इवन प्रिंटेड कई जगह पे आपका प्रिंटेड बिल नहीं मिलेगी, हैंड बिल लिखते हैं। प्रिंटेड बिल नहीं मिलेगी, हैंड बिल सबमिट हाँ, हैंड बिल लिखते हैं। हैंड बिल होंगे, बट इन दोस केसेस व्हाट यू हैव टू पुट इट इनटू द कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन इज द एंटायर कम्युनिटी, those over the committee, they sign on the bill, Yes, yes. all they sign on the bill, yes, we validate that. तो certify करते हैं सर। कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट कमेटी जो होता है ना सर, हाँ। उसका जो मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर होते हैं या 4 मेंबर होते हैं, तो पूरा साइन करते हैं पूरा बिल को। फिर इंटरनल ऑडिटर का क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर भी वो points निकलते हैं। रेज करता है। नहीं आप ब्रीफ करो, it is purely lack of understanding, purely lack of understanding of the ground reality. आप वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, then they will get a GST invoice. कोई बड़े मैन्युफैक्चरर डीलर से ले रहे हैं GST invoice. अगर रोड साइड में सिविल ये वाला बिल्डिंग मटेरियल शॉप रख के चलाते हैं, उनसे आप GST होते हैं तो आगे अगली बार आना ही मत यहाँ, दूसरे कहीं से ले लो। दूसरा सर, अच्छा सॉरी सर, ये रूल्स मतलब किसके लगेंगे इसमें, क्योंकि आपने प्रिंसिपल तो बता दिया आईपीडी के होंगे, रूल किसका लगेगा कम्युनिटी को? कौन सा रूल? जैसे उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल लगेगा। हाँ? क्या? नहीं कैलाश जी नहीं, अब वो क्लैरिफिकेशन देयर इज नो दिस वन फॉर आस्किंग क्लैरिफिकेशन, देयर इज नो हेजिटेशन, आस्क क्वेश्चन व्हाटएवर क्वेश्चन यू वांट आस्क। कई बार क्या होता है कि हमारा ऑडिट हो गया, हाँ। उन्होंने कहा भैया आपने जो है 8 लाख का प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट कैसे कर दिया कम्युनिटी ने, तो कौन से रूल से किया? कौन कहेगा? नहीं माना कोई Auditor हो गया, माना डिस्प्यूट हो गया, ऑडिटर कहेगा। हाँ डिस्प्यूट हो गया, ऑडिटर हो गया,
डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने कहा इनके अकाउंट सील नहीं डिस्प्यूट नहीं, मैं आपको फर्दर में आपका सवाल का मैं फर्दर में पूछ रहा हूँ, डिस्प्यूट कहाँ से आएगी? ऑडिटर पूछेगा, ऑडिटर पूछेगा, ऑडिटर पूछेगा ना, या हो या ऑडिटर कम्युनिटी में से किसी ने रेज कर दिया क्वेश्चन, देखो ऑडिटर पूछेगा ना, ऑडिटर आप भेजोगे ना, नहीं वो ऑडिटर आप एंगेज कर रहे हो ना कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी फैसिलिटेशन प्रोक्योरमेंट का ऑडिट करने से पहले आप ऑडिटर का ब्रीफ करो, ये प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट्स लेटर में ये वाला लिखा है, 10,000 लिखा है, ये गाइडलाइंस है, ये डॉक्यूमेंट है, इतनी डॉक्यूमेंट उनको मेंटेन करना है, अभी जाके ऑडिट करके बताओ ये वाला मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। कोई इसमें गड़बड़ है, इरेगुलर प्रैक्टिस है, वो वाला आप हमें बताओ। वो बताना पड़ेगा। $10,000 अलाउड है, इफैड ने अलाउ कर दिया, डोनर ने अलाउ कर उनको दिया, हमें देना गवर्नमेंट ऑफ पड़ेगा। उत्तराखंड ने अग्री कर दिया। कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट पीओयू ने बनाया विथ द सजेस्टेड टेम्पलेट फ्रॉम इफैड, पीओयू ने उसके लेके उसके रिव्यू कराया, फाइनलाइज कराया, ट्रांसलेट कराया, उनको ट्रेनिंग कराया। So when you go for the auditing, these are the documents आपको चेक करना है, अगर है उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें कोई ओवर राइटिंग है, कोई 2 साइन करने में कोई भी साइन नहीं कर रहा है, अगर नहीं है डिस्ट्रिक्ट करके इनको दे रहे हैं, all these things the auditor will put it up. हमेशा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने से पहले ऑडिट टीम का ब्रीफ करो पहले, क्या आपका प्रोजेक्ट का कंपोनेंट्स क्या है। आगे तो कहेंगे ये वाला पिग ने उन्होंने तो लोकल मार्केट से खरीद लिया, इसका वो वाला हर पिग का वो वाला टोटल करा के वो कहेगा ये होता शॉपिंग आपका इफैड का प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन से उनको नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग करना चाहिए। तेरा वो वाला सुन रहे थे ना, वो बोले ये वाला जीएसटी वो रईस होंगे। तो इसलिए टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ऑडिटर का भेजने से पहले नॉट ओनली द कम्युनिटी ऑडिट, इवन योर इंटरनल ऑडिट, योर एक्सटर्नल ऑडिट, जाने से पहले ब्रीफिंग करके भेजो। पैराग्राफ जो भी ऑब्जर्वेशन है, that those observations need to be discussed first. Only when it is finalized, it will go into the report. उस समय डिस्कशन टाइम में आप चुप रहेंगे, then the audit report will become final. बाद में कहेंगे नहीं जी हमने उनको बताया था, डॉक्यूमेंट दिखाया था, वो कोई मानेंगे नहीं। So before the assignment, after the assignment, debriefing, हर पैरा के लिए आप डिस्कस करके then finalize the audit report. ये particularly this is for districts, क्योंकि districts में when they go for internal audit or even for the external audit, there will be observations. But observations का आप discuss कर लो whether you agree or disagree. If you disagree, ask the auditor to put that observation. बिना डिस्कशन don't allow the auditor to finalize the report. So what is the constitution? This is indicative. You can modify, revise as per your project specific requirement. Constitution of a procurement committee for all purchases procurement to be carried out by the VDC, because this was related to OPELIP, so we have put it as a village development committee. In your case, you put it accordingly to community organization. A community procurement committee shall be constituted from the members of the VDC. कौन इसमें members कौन है? Secretary of the community organization is the chairperson. 2 members with at least 1 woman, they being the part of the community procurement committee. Rotation of the members, all other your governance procedures
will be सर अप्रूविंग अथॉरिटी भी लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट कमेटी के नाम क्या हु विल अप्रूव किसका लोग प्रोक्योरमेंट कमेटी लिख गई है हु इज गोइंग टू अप्रूव दैट प्रोक्योरमेंट कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट कमेटी इज एम्पावर्ड। बाद में वो वाला पूरा कम्युनिटी के लिए बताएंगे ना, वो सोशल ऑडिट में हाँ हमने ये किया करके बताएंगे ना। जैसे इन अवर उनका governing body कुछ तो होगी। की अप्रूविंग अथॉरिटी इज डिफरेंट अगर रजिस्टर्ड में एलसी है सीएलएफ है उनका गवर्निंग बॉडी तो होगी। मैं कह रहा हूँ जैसे इन अवर केस प्रोक्योरमेंट कमेटी इज डिफरेंट फ्रॉम या और प्रोक्योरमेंट कमेटी डिफरेंट फ्रॉम द अप्रूविंग अथॉरिटी। वो आपका प्रोक्योरमेंट है। हाँ, उनके यहाँ भी कोई अप्रूविंग अथॉरिटी की जरूरत है? वो इसलिए तो सेक्रेटरी आपका है, सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी, उनका गवर्निंग बॉडी का सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो है नहीं, उनकी इंटरनल कमेटी भी बनी है। इसमें ऐसा है, देखो जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉर्मली लेट अस से इन देयर केस विलेज डेवलपमेंट काउंसिल, जो भी प्रोक्योरमेंट वो करेंगे, दे विल पुट अप थ्रू रेजोल्यूशन टू द काउंसिल एंड दे विल बी रेटिफाइड। लेकिन इन लोगों को वी डोंट स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग प्रोक्योरमेंट एक्शन। दे विल परचेज द मटेरियल बट इट विल बी रेटिफाइड बाय द काउंसिल विद इन 1 month. That provision we are keeping in the guidelines. So, हाँ, depending upon the type of community, it will be approved by some council. क्योंकि सोशल ऑडिट भी आएगी, सोशल ऑडिट भी आएगी, फाइनेंशियल ऑडिट अब ये वाला भी है। अगर ये हर बार ये वाला आप, दैट्स व्हाट हमने ये वाला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक सेपरेट फ्रेमवर्क बनाया। आपका जो रिगर है वो कम्युनिटी डिटो वहां डिप्लॉय हम कर ही नहीं सकते। अगर आपका सेम रिगर हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का करना है, क्यों कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों देना है? पीएमयू करने दो, उसको पूरा करने दो। Sir, in this case, sir, particularly from OPLIP side, the CPC finalized the procurement items that had to be procured on these things, and then they put off this one to the VDC, and VDC take a call, like the approves that हाँ, वो आपका सिस्टम वो वाला जो बीडीसी अंडर है, उसका अंदर आपका दूसरा है भी, एक बीडीए भी है आपका, ये वाला वो वाला आपका सिस्टम है। कौन अप्रूव कर रहे हैं वो विद इन द गाइडलाइन। जनरल बॉडी मीटिंग में भी बीडीए का जो 6 months का जनरल बॉडी मीटिंग में क्या क्या प्रोक्योरमेंट होगा पूरा डिटेल लिस्ट है, वो एजेंडा करेंगे। Normally, rotation of the members to try to do the rotation, but it may not be always possible to do a new members to taking on the, क्योंकि procurement committee के लिए कुछ तो education का जरूरत है। अगर if it is available and the persons are willing to take the responsibility, it is ideal if you rotate it at least once in a year or 6 months. But if it is not, okay. क्योंकि सर 6 month में अगर हम परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से जो उनको सिखाया गया है फिर नेक्स्ट जो भी आएगा वो जल्दी इतना ग्रास्पिंग पावर नहीं होती सर, वो जल्दी से सीख पाए। और वो होगी ग्रास्पिंग नंबर पावर नहीं होगी करके वो वाला स्टेटमेंट का हम अग्री नहीं कर सकते है, बट देयर इज अ विलिंगनेस टू टेक द पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी एट द कम्युनिटी लेवल। कौन उसका ले सकता है, विलिंगनेस है, दैट इज आल्सो देयर। एक साल सर कम से कम 1 वर्ष तक रहे वो तो ज्यादा 6 महीने 1 साल, दैट इज द आइडियल सिचुएशन आई एम सेइंग। अगर एक ही कमिटी कंटिन्यूअसली रहेगी तो देन देयर आर चांसेस ऑफ इरेगुलर प्रैक्टिसेस सीपिंग इनटू द प्रोसेस। जैसे अब एसएचजी में आप रोटेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी का आप कह रहे थे ना, सेम ये है। अगर एक रख के फिर 2 को रिप्लेस कर लो, उस तरीके से व्हाटएवर द मैकेनिज्म यू फाइंड इट कन्वीनिएंट एंड पॉसिबल एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल।
कौन सा procurement है? Shall make all procurements through direct purchase and local shopping depending upon the value and nature of the goods, works and services. इसमें आप डायरेक्ट परचेज और कॉन्ट्रैक्टिंग का लिमिट करा सकते हैं 50,000. In this we have said up to 50,000, right? But you can fix up a limit. Beyond this, there will not be any direct contracting. It will using the quotations. Quotation on some form of competition. The amount read PMU at the time of finalizing the guideline, they can fix it. सर एसएनजी के केस में या प्रोड्यूसर ग्रुप के केस में उनके पास इस तरीके की कोई बिल बुक नहीं होती क्या? बिल बुक वगैरह नहीं होती सभी में प्लेन पेपर पे लिखते हैं कि मैंने 150 रुपए प्रति किलो की दर से राजमा सेल आउट किया उस पे एसएनजी की मतलब एसएनजी के पास सर कोई बिल बुक नहीं होती तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे सर इसका मतलब आप सुन नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा तो कुछ अभी वो ये वाला है तो अनप्रिंटेड बिल है, प्रिंटेड बिल नहीं है, जो भी है उसमें प्रोक्योरमेंट कमेटी तीनों प्रोक्योरमेंट कमेटी मेंबर्स उसमें साइन करेंगे हाँ ये हमने किया है। फिर वो वाला उनका पूरा गवर्निंग बॉडी में हाँ इन तीनों से इनसे लिया करके उनको पता है। लोकल शॉपिंग माने वो आपका कोटेशन। इसमें भी कोटेशन में ये वाला कोटेशन भेजो वहां से उन्होंने कम्युनिटी के लिए इंडिपेंडेंट ईमेल पे भेजेंगे वो वाला अलग से कोटेशन भेजेंगे ये पॉसिबल नहीं है। सो यू नीड टू अगर कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट अगर कोटेशन कलेक्ट भी करते हैं they will go to the market and collect the quotation. The only thing they need to understand is अगर ये कम्युनिटी में तीनों प्रोक्योरमेंट कमेटी मेंबर एक साथ जा रहे हैं to collect the quotation, they can collect it. अगर उसमें एक ही जा रहे हैं दूसरा कोई कम्युनिटी मेंबर जा रहा है उनसे इट्स उसका बंद करके दे दो चिपका कर दे दो यहीं आके विलेज में आके उसको ओपन करके वो वाला देख लेंगे। नो पब्लिक ओपनिंग उस तरीके से नहीं है जस्ट एज अ प्रिकॉशन एक को देख के दूसरा कोई कोटेशन ना दे वो बता एटलीस्ट 3 कोटेशन कम्युनिटी फॉर्मेट तो सिंपल होगा ना सर इसका किसका जो वो डॉक्यूमेंटेशन वाला है वो तो छोटा सा एक पेज का जो आप करें जैसे आरएफक्यू का अरे आप जम मत करो मॉड्यूल जम मत करो पहले पीछे आ रहे इसमें है आपका कम्युनिटी कोटेशन सोर्स करने में we have seen in some other project DPMU अर्निया FNGO एक ही कोटेशन लेके सबको दे देते हैं फिर वो वाला उन्होंने लेके हमारा ये वाला विलेज में भी ये 3 कोटेशन है वो वाला इसमें भी 3 कोटेशन है। डिस्ट्रिक्ट्स और एडवाइस not to do this. They will not do procurement process on behalf of the community. Quotation select कर रहे हैं. Rate contract they can set up with the contract with the DPMU and the supplier. But community procurement stage में you can tell them about the source of supply. यहाँ भी आप check कर लो, यहाँ भी check कर लो source of supply. Quotation they have to go and get it. जब रिव्यू में पोस्ट रिव्यू में पता चल जाएगा अगर ये एक डीपीओ से लेके हमने 4 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोटेशन देखा था सब एक ही 3 कोटेशन है then that means district has facilitated that. We will come to the conclusion. Straight away. नहीं सर ये probability से ये all CLF or all livelihood collectives taking
quotation only from those 3 suppliers, it is the probability is 1 in million. वो नहीं हो सकता। नहीं सर, एक्चुअली 3 गांव जो है, 3 गांव का जो सेपरेट नियर बाय अगर 3 ही वेंडर है तो 3 गांव का लोग वही 3 वेंडर के पास ही जाएंगे। 3 ही वेंडर है करके पता होना चाहिए ना। नहीं, एनजीओ ने उसको बता दिया जे एनजीओ आपका एनजीओ दूसरा कर रहा है, वो हम बायलैटरली कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला फोरम में ये वाला नहीं है, वो नहीं है, वो अलग से आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट फोरम में। 4 वेंडर होंगे तो 4 वेंडर के पास ही लोग जाएंगे ना। Community लाएगा If if the intention is okay then okay है। हाँ, if community चीनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फैक्ट नहीं है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं सर, लेकिन मैं आपका जो जनरल फोरम में बोल रहा हूं, जनरल फोरम में मैं बता रहा हूँ, अगर नियर बाय विलेजेस में 1-2 विलेजेस में if there are only 3 suppliers available, always they will go to the 3 suppliers, fine, but अगर 3 ही है करके there are no compulsion, that may be, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट आपके केस में वो दूसरा है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। So these are the processes, you can review these processes. क्या डॉक्यूमेंट उनको मेंटेन करना है कम्युनिटी को, प्रोक्योरमेंट मिनट बुक, procurement register will be maintained by the community procurement committee, where the information of the procurement shall be comprehensively recorded. क्या information है? Date of the meeting, अगर case file number अगर वो करना चाहते हैं और नहीं, और serial number, just to differentiate what is the procurement. Date of the meeting, nature of the procurement, क्या method use करा है, किस से कंपैरेटिव कोट लिया, ये रजिस्टर में भी जैसे एसएचजी रजिस्टर में लिखते हैं, एसएचजी रजिस्टर में भी इस तरीके से फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं। कितने अमाउंट है, कौन सप्लायर है, कब ऑर्डर किया, सबने साइन करना, ये दिस इज द प्रोक्योरमेंट बुक। केस फाइल गिवन फॉर सच नंबर, ये वाला वो ओपलिक वाले ने ऐड कराया, क्या कोटेशन आपका जो केस फाइल इज लाइक आपका जो भी प्रोक्योरमेंट का है फाइल है, डॉक्यूमेंट्स कितनी कोटेशन आई है, वो वाला है, रिसीट है, सब कुछ उसमें मेंटेन करने के लिए एक वाला फाइल है। मनी रिसीट, फोटोकॉपी ऑफ द सप्लायर, ये मदर्स photograph of the goods work activity for which the procurement was made. NGO support आपको नहीं है, so because in this project there are no NGOs. ये लीड फार्मर से अगर लेंगे, नियर बाय विलेजेस से लीड फार्मर से सीड लेंगे, then what is the material? They can go lead farmer से लेंगे, so then there is no that the other lead farmer will not give you anything in receipt, invoice, ये quotation ये वगैरह करके नहीं देंगे, so it will be mostly verbal. अब ये वाला सोयाबीन का कितने किलो में दे रहे हैं, 150 रुपए किलो, ओके, नोट इट डाउन इन द रजिस्टर। दूसरा लीड फार्मर आप कितने में दे रहे हैं, 145, नोट इट डाउन, कितने क्वांटिटी आप दे सकते हैं, सो रजिस्टर में रिकॉर्ड करा के जो भी है सब साइन करेंगे, हाँ ये वाला 145 क्वांटिटी भी हम अच्छा दे रहे हैं, उसका क्वालिटी वैरायटी भी ठीक है, सो कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट कमिटी विल डिसाइड 145 से हम 10 क्विंटल चाहिए,
उस तरीके से रजिस्टर में एंट्री करते हैं. And sir, they can take samples also from them, just to fill They can see the sample also. They go on visit. They go on visit the lead for seed क्या available है. They can go on seed and visit. इसमें lowest amount है. Any other criteria जो आगे वो free आके आपका village में जमा कर देंगे. अगर नहीं हम ही distribute कर देंगे. Maybe there are other criteria. Then we say we have visited the farmers, check the quality, price and availability and recommend the materials may be purchased. All sign this way. Important is you need to translate this into Hindi local language. English में आप मत दीजिए उनको, नहीं होगा. नहीं हिंदी में देंगे, पिछली बार भी हिंदी में दिया. भाई ये मतलब एनिमल्स लेने के लिए there are certain processes. ये दो कहना चाहिए आप कह रहे थे कोटेशन का टेम्पलेट. क्या यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ वर्क्स, एर्थ वर्क करनी है, बिलिंग, बिल ऑफ मटेरियल आइटम, डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी वर्क, बस. एक पेज का कोटेशन वो भर के दे देंगे, इवैल्यूएट कर लो. हो सकता है हमने इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे डाल रखा है. If they have a GST registration, they will give it to you. If not, ask the community wherever possible to put it into the suppliers. The shopping के लिए वो अगर quotation मांगेंगे, wherever possible, अगर उनका letterhead है, letterhead में उनका लिख के दे, so that it is easier. अगर letterhead ही नहीं है, at least rubber stamp डाल के sign करके दे, with details, address है, name of the shop, address, any contact number, उस तरीके से. परचेस ऑर्डर इतनी है, क्या हम इनसे ले रहे हैं, यूनिट प्राइस ये एग्री हुआ है, टोटल प्राइस, ट्रांसपोर्ट कास्ट इफ एनी, कब डिलीवर करना है, कहाँ डिलीवर करना है, कोई एडवांस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, डिलीवरी कब देंगे, सिंपल. Suppose if the PMU or DPMU want to have a rate contract for seeds, particularly for seeds or other material, the PMU will initiate a rate contract, sign a rate contract with the supplier and ask the community to place the order to the same supplier. तो उस समय कम्युनिटी अपने प्रोक्योरमेंट में रिकॉर्ड करेगा ये पीएमयू का रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पीएमयू का रेट कॉन्ट्रैक्ट है, सो वी हैव टेकन द सेम रेट एट द पीएमयू और डीपीएमयू रेट कॉन्ट्रैक्ट करके कोई साइन नहीं करते हैं, कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करते, देन यू आस्क द कम्युनिटी टू गो टू दैट पर्टिकुलर दिस वन, दैट इज नॉट अलाउड. अगर आपको रेट कॉन्ट्रैक्ट करना है कर दीजिए, so that all community will go to that particular seed supplier or planting material supplier or any other machinery supplier. Then the procurement process is yours. They will go only indent, get the amount back and pay it. सर यहाँ पर कितना एडवांस कंसेंट 20% एडवांस कैन बी गिवन Community के लेवल पे आप if they can enforce 20%, whatever that is. एडवांस यही है, वो डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे बस उसके लिए. Normally you discourage from giving advance. Against the material आप पैसा दे दीजिए, material लीजिए और पैसा दे दीजिए. That is the system which you can follow.
एडवांस देना डिस्करेज करिए, अदरवाइज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू इन फ्यूचर। पैसे ले देंगे नहीं क्योंकि उसके लिए अलग से भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। Sometimes if अगर तो RFQ मांग रही है तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ऐसा टेम्पलेट अलग से नहीं है ना आपका कोई? अलग से टेम्पलेट नहीं है, गुड्स का टेम्पलेट है, गुड्स का टेम्पलेट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उस हिसाब से गुड्स का टेम्पलेट है, उसमें आप बता दो कि ये रेट कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी क्वालिटी, बिकॉज शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स उसमें आ जाता है। शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स में आप बताओगे इतनी टोटल क्वांटिटी इतना है, हु विल बी द इंटेंडिंग अथॉरिटी, कौन आएंगे, उसके अपवर्ड और वो डाउनवर्ड रिविजन का कितने परसेंटेज है, 5% है, 10% है, वो वाला बता दो। That's a rate contract. They have to complain to all the other one. The quality, ये वाला होना चाहिए. The price will not be increased beyond the rate contract. Rate contract period will be from 6 महीने के लिए or particular season. Because for particularly if it is for seats, nobody will get a rate contract beyond season. Beyond season. Or you can have it for 2 seasons. If they agree to go for 2 seasons, you can give it for 2 seasons. Rate contract, you apply the rate contract when the requirement of seed is uniform and bulk. All other parties, all other community organizations will go for ये वाला आपका अमरांत का है, नया पोटैटो है, सोयाबीन है, राजमा है. If you want to give that type of a seed, quantity is high, then you can have a rate contract. Quantity एक इसमें 5 किलो है, 10 किलो है, दूसरा ये है, then it is very difficult to administer rate contract. Clear? कोई बट जिसे एक बार पूछ लीजिए, हाँ? बट जिसे पूछ लीजिए नहीं, वो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। वो अगर नहीं है तो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कई ऐसे पूछ लेते हैं। हमारा जैसे वो एजुकेट नहीं करते हैं, बाद में मैं ईमेल से पूछ लूंगा करते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उनका मन में कोई डाउट है पहले ही पूछ लेते हैं। पूछना भी हालत से क्या मान लीजिए कहीं अभी भी है कोई? हाँ? ये चल सकती है? बस ओके। अभी श्रीराम साहब ने बताया कि there should be a separate case file at community level for each case. Do you think it is possible at community level? If it is not possible, in some of the states it has been possible, but in your case, if it is not possible, they should have procurement proceedings in the register, and all the documents can be kept in one file. Okay, so you develop your own system based on capability of your community. See, when you roll out the community procurement guidelines, there will be errors. Don't take it up ने उनका ट्रेन कर दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट करके ट्रेनिंग कर दिया है, पूरा फुल प्रूफ में 100% जाएगा करके है ही नहीं. There will be errors. But वो error, mistake किस वजह से है, you need to analyze. अगर lack of understanding है, कुछ वो अलग process में छूटे हैं, again you can tell them और उनका capacity आप बढ़ा सकते हैं. If it is for irregular practice or other practice, then you have to be very firm. Mistakes है होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, out of 100 procurement, there will be mistake, there will be lack of documentation, there will be some processes not being followed. But that will not be the reason to district unit to take up the community procurement themselves.
तो सर इसका एक थोड़ा अब मिस्टेक्स होना है तो आप एनालाइज कीजिए किस तरीके से मिस्टेक हो रही है, कहाँ फॉल्ट हो रही है, उनका दोबारा आप एक बार ट्रेनिंग देके आप उनका स्ट्रेंथन कीजिए। डोंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट आप अपने आप को नहीं, ये वाला उनका कैपेसिटी नहीं है, बार बार ये हो रहा है, ये वाला मिस्टेक हो रहे थे, हमारा डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ रही है करके डोंट गेट इट टू द कम्युनिटी बिल्डिंग। उनका करने दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनका नॉलेज बेस का स्ट्रेंथन कीजिए, एनहांस कीजिए। पिछले वाले में क्या होता था आईएलएसपी में हमारे डीपीएमओ से एक असिस्टेंट मैनेजर नॉमिनेटेड था सिग्नेचर उनके साथ कि 50,000 से एक थ्रेशोल्ड था, 50,000 से ज़्यादा का प्रोक्यूरमेंट करते हैं देन डिस्ट्रिक्ट लेवल का असिस्टेंट मैनेजर उस पे सिग्नेचर। I would not recommend involving the DPM to the approval process of the community organization. आप देख सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 6 महीने में 3 महीने में रिव्यू करा सकते हो, बट अकाउंट बिकॉज दे आर if they are registered body, then putting a person outside the registered body as the account signatory, it is basically wrong. Basically wrong. क्योंकि then assistant manager becomes the all powerful. It goes into the other pendulum, goes to the other extreme. Community will not get the governance. Assistant manager will become all powerful. वो अब मत करो। And we have to empower our community. Our project is about that. 7 साल के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहेगा, उस समय क्या होगा? तो पहले से शुरू से उस समय क्या हो? मिस्टेक्स होंगी। यस। सर अभी जो कैलाश सर ने कहा कि एक असिस्टेंट मैनेजर था, एक्चुअली देयर इज ए प्रोविजन इन द कोऑपरेटिव मॉडल बायलॉज कि उसमें एक जो चीफ फंक्शनरी एक मुख्य कार्यपालक होगा जो कि प्रोजेक्ट का एक नॉमिनेटेड कोई मैनेजर होगा, वो वहाँ पे एज ए मुख्य कार्यपालक के तौर पे उनको असिस्टेंस देगा और वो उनके जो हम जो सपोर्ट देते हैं सीड कैपिटल या शेयर कैपिटल का, वो केवल उस अकाउंट में जो है जॉइंट सिग्नेटरी होगा विद द प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। दैट ये एक अलग प्रोविजन था। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पर्टिकुलरली उनके दैट प्रोविजन आल्सो मेड इन द बायलॉज and that is accepted by the federation itself on the bylaws and the board meeting that they are ready to मतलब उन्होंने उस मुख्य कार्यपालक की पोस्ट को अडॉप्ट किया था with the bylaws। नहीं, दिस इज आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बता रहे हो? यस सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इज इट द बायलॉ, नहीं दैट इज फॉर द बायलॉ, कौन बनाए कौन, इज इट द गवर्नमेंट रेगुलेशन? हाँ मॉडल बायलॉज that is a model bylaws provided by the ILSP project और नहीं ILSP नहीं एक मॉडल बायलॉज था, उसके बाद उन्होंने उस बायलॉज को is it mandated by the cooperation department of government of Uttarakhand और government of India का सर cooperation? कोऑपरेटिव जो सेल्फ लाइन कोऑपरेटिव एक मिनट सेल्फ लाइन कोऑपरेटिव एक्ट जिसमें हम अपनी फेडरेशन को रजिस्टर करते हैं, हाँ। वो अलाउ करता है कि कोऑपरेटिव के विद इन द प्रिंसिपल दे कैन मेड देयर ओन बायलॉज और वो बायलॉज बनाने में जो है प्रोजेक्ट ने उनको हेल्प की थी कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू मेक ए मॉडल बायलॉज। तो उस मॉडल बायलॉज में ये प्रोविजन किया गया था, चूंकि एक बड़ा अमाउंट है जो शेयर कैपिटल के रूप में इनको दिया जा रहा है और उसके मिसयूज को मतलब कंट्रोल करने के लिए और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए उस बायलॉज में प्रोविजन किया गया कि एक मुख्य कार्यपालक जो है उसमें नियुक्त किया जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर अपने किसी असिस्टेंट मैनेजर को, इट मे बी सभी फेडरेशन के लिए एक हो और अलग भी हो सकता है, उनकी नियुक्ति करेगा कि आप इस फेडरेशन में एज ए मुख्य कार्यपालक आपको नियुक्ति किया जाता है। तो ये केवल एक अकाउंट के लिए था जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल था। There was a separate account also was there which is the salary and operating account जिसका separately management वो खुद करते थे। केवल एक्टिविटी अकाउंट सर। देखिए ये this provision जो भी आप कह रहे हैं, ये वाला provision, this is not mandated by the Cooperative Society Act. Cooperative Society Act allows, आपने यही कहा, Cooperative Society Act अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाते हैं, it allows the individual cooperative society to make their own bylaws, right?
That is there always, not only the cooperative society, even society registration में भी जो भी सोसाइटी रजिस्टर करने जा रहे हैं अपना बायलास वो खुद करेंगे. But what you did, this is the ILSP, you put in your provision there. You wanted to control the cooperative society, not the government said. गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कहीं भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये नहीं होंगे. यू कैन हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर कोई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे कोई आउटसाइडर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे कैन बी एम्प्लॉयड so that they can have a industry. But this provision included is your ILSP provision. You wanted to put them under your thumb. उसमें जो मुख्य कार्यपालक जो बना था स्टार्टिंग में जो स्टेम फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है, स्टेम सेक्रेटरी बनती है, तो मुख्य कार्यपालक नियुक्त होता है उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनाए. तो मुख्य कार्यपालक के अध्यक्ष नाम मिनिस्टर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है. देन जब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स आते हैं तो मुख्य कार्यपालक का काम वहां पर वो खाली उनको मॉडरेट कर रहे हैं कि वो लोग आकर के अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन कर सके. देन वो धीरे 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 हटता है और फिर धीरे धीरे नहीं हटते. ये वाला आपका मुख्य कार्यपालक का आपका इंटेंशन यही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एस्टैब्लिश करा के उनको ट्रेनिंग करा के उसी समय उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए दे टर्मिनेटेड, उनका टेन्योर टर्मिनेटेड हो गया तो आई कैन अंडरस्टैंड. धीरे धीरे हटता है तो वो धीरे धीरे कभी आएगा नहीं. तो कॉर्पोरेट एक्ट तो यही है. फिर उसका बोर्ड फॉर्म हो जाता है. फिर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका अकाउंटेबिलिटी क्या है उनका. सर जो मेजर अमाउंट एक्टिविटी के लिए सर जो सेपरेट अकाउंट था ना, इनका एक था एक्टिविटी अकाउंट, शेयर कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका खुद का शेयर कैपिटल होता है. द मेंबर्स कैन डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू विद देयर शेयर कैपिटल एज पर द बायलॉज, एज पर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सर इसकी फैसिलिटेशन के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर को एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी कि कस्टोडियन के रूम में इसका कहीं मिसयूज ना हो. जैसे एक्टिविटी सर 2 लाख रुपए की, फिर आप दो मत, मिसयूज ना हो तो दो मत. क्यों दे रहे हो, दो मत. आप पूरा आप इंप्लीमेंट करो. नहीं सर वो तो है. This is a backdoor entry. ये this way you will not empower the community institution. आप ये कह सकते हैं हर महीने आके असिस्टेंट मैनेजर जाके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके उनके रिव्यू करके उनका रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेंगे. यस, दैट इज एक्सेप्टेबल. But don't make the assistant manager part of their governing structure. That particular assistant manager will become the chief executive. वो बाद में कम्युनिटी हट जाएंगे, नहीं असिस्टेंट मैनेजर साहब यही कह रहे हैं, so they cannot raise the power dynamics. आप समझो उसमें वहां उनका कोई भी कम्युनिटी मेंबर्स का वॉइस नहीं होगी टू गो अगेंस्ट असिस्टेंट मैनेजर. उनका ये डर रहता मैंने तो आवाज उठा दिया था अगली बार मुझे असिस्टेंस नहीं मिलेगी. So community part, whatever the other one that is beyond my this one domain, community participation procurement में district managers will not get involved. District staff will not get involved as far as procurement. बाकी आप क्या कर रहे हैं उनका cooperative society के लिए, those are all my personal views, right? That has got nothing to do with the procurement. थैंक यू सो मच सर. मैं क्योंकि एनआरएलएम को देख रही हूँ तो कम्युनिटी के साथ में वर्क हम कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहने हैं और प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा. जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में और जब ये कहा जाता था कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप अपना सेल्फ गवर्नमेंट करना है, तो एक कुछ सेक्शन था जो ये लॉजिक देता था, आर्गुमेंट देता था, इंडिया इज नॉट मैच्योर इनफ टू रूल फॉर इटसेल्फ.
So we are there to help them get mature so that they can self-govern themselves. यहाँ पे सर वही बात मुझे लगती है, कम्युनिटी के लिए जब हम ये कहते हैं कि हमें उनको फैसिलिटेट करना है, तो वो फैसिलिटेट जो हमारा वर्ड है वो हमारा किस लेवल तक जाने वाला है सर, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है डेफिनेटली मेरा भी, क्योंकि एक बार आप उस सिनेरियो को विजुअलाइज कीजिए कि हम जब ग्राम संगठन की बैठक होती है उसमें जब मैम दूसरे लोग जो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं जो मिशन का स्टाफ है, तो देयर इज अ सेपरेट प्लेस फॉर देम, एक एयरमार्क्ड एरिया है जहाँ पे वो लोग बैठेंगे, और बाकी जो वीओ मेंबर्स हैं, जो उनके जो मेंबर्स हैं, दे हैव अ सेपरेट एरिया जिसमें उन लोगों को बैठना है। तो हम लोगों का बैठना भी ऐसे होता है कि वो ये ना फील होने लग जाए कि हम उनके साथ में वहां पे उनको कुछ डायरेक्ट करने के लिए आने वाले हैं। इस तरह से दिखना चाहिए कि हमारा उस पूरी प्रोसेस में कोई रोल ही नहीं है, वी आर जस्ट देयर टू सी एज ऑब्जर्वर्स, और हम देख रहे हैं और हम उसको फैसिलिटेट भी तब करेंगे जब उन्हें हमारी जरूरत है फैसिलिटेशन की, कि हमें इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए और प्लीज बताइए। पर होता क्या है कि फैसिलिटेशन के नाम पे हम कई बार अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो हमारी उस प्रेजेंस से कई बार क्या होता है, इतना हेजिटेट हो जाते हैं, जैसे सर ने कहा, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कहीं पर उनको ये उनको मैं कहूंगी कि उनको मतलब इनडायरेक्ट डिस्क्रीटली सिग्नल्स भी मिल जाते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है। अगर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, सपोज एक फैसिलिटेटर है, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं वहां बैठी हूँ, मेरा कुछ फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो कम्युनिटी को मेरे इशारे अपने आप समझ आ जाएंगे, वो डरेंगे या वो वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा उनको करना चाहिए। तो यहाँ पर सर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने परसों जिस दिन मैम ने कहा था कि आप लोग आईफेड का वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसी दिन मैंने ये डाउनलोड किया मैम, हैंडबुक जो है प्रोक्योरमेंट पर आईफेड का, और उसका लास्ट चैप्टर था कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट का, वो मैंने पढ़ा पूरा, तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा जी सर। उसमें दो चीजें हैं कि कम्युनिटी खुद भी कर सकती है और सबलेट भी कर सकती है। अगर उस वर्क को कोई दूसरा वहाँ गांव में कर रहा है, कम्युनिटी उसको सबलेट भी कर सकती है, वो भी प्रोविजन सर उसमें है। जी सर, जी सर। तो मेरा ये इसमें पॉइंट सबमिशन यही है कि हम कम्युनिटी को ये ना समझें कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, हम ऑलरेडी एक स्टेप उठा चुके हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए। जैसे मैम ने कहा, हम उनके यहाँ पे अकाउंटेंट को तैनाती कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। हमने ये किया है कि भाई कम्युनिटी के बीच से ही जो एफिशिएंट है एसएचजी मेंबर्स या उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो उनके अकाउंटेंट बन जाएंगे। हमको ये करना चाहिए कि ये जो इफेक्ट के जो गाइडलाइंस हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद जैसे हम लोग का कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, 5 डेज का स्टार्टअप वर्कशॉप मैम ने कराया, अगेन 3 डेज का वर्कशॉप कराया, तो रिपीटेड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी, इस पे हमको फोकस करना चाहिए जिससे कि उसको हैंडल कर सके, rather than imposing ourselves in the name of being facilitators, और फिर हम कहें कि ये लोग इसको नहीं कर पाएंगे तो हम इनकी मदद करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी सर आई फुली एग्री कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट का कुछ भी रोल नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम उनको ये सब हिंदी में ट्रांसलेट करके दें। They can advise the community organization from where they can get the source of supply. Sometimes the community may not know. Suppose if there is a machinery involved, right? Or a particular, they don't know about who is the lead farmer in the next village, or who is the progressive farmer in the next village. So these type of information the DPMs can share to the community. भाई इस village में lead farmer है, उनका crop ये है, seeds में है, इस village में ये वाला lead farmer है, so go and get that. That facilitation वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपका वो वाला मैं फर्दर लेके जाऊं, हाई वैल्यू है करके लेके जाऊं, पर रीप प्रोजेक्ट $105 million IFAD का फाइनेंसिंग है। So do you think that IFAD should put an authorized signatory over here along with the PD? It is not possible. फिर एक चीज और भी है कि अगर हम यूरिक वाला पार्ट देखें, उसके बाद आरएससी वाला पार्ट देखें, और भी वो उसमें जरूरत भी थोड़ा सा कम्युनिटी का जो यूरिक पे जो लेवल था उससे बहुत ज्यादा लेवल आईएलएसपी के लेवल पे हो गया है, और अब रीप पर तो और अच्छी तरीके कम्युनिटी चीजों को समझने लगी। आप देखो ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत में अध्यक्ष बन के आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, कोई बीटेक भी है, ग्रेजुएट भी है, बड़े बड़े, तो कम्युनिटी लेवल अपने आप काफी और
जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे काफ़ी चेंज भी हो गया। तो अब तो कम्युनिटी को काफ़ी अवेयर वैसे भी होती है, हमने उन्हें फैसिलिटी भी करना चाहिए। You review their work, community participation, every month or once in a quarter, you review their work, how they comply to the guidelines. That is your responsibility, DPM's responsibility, DPMU's responsibility. वहाँ, that's why the community participation procurement का major objective है to empower them to improve their governance so that they can receive more public funds. Additional दूसरा डिपार्टमेंट से भी वो पब्लिक फंड्स अगर ये वाला करके रीच से इंडिपेंडेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोक्योरमेंट करके वो कैपेसिटी हो जाएंगे, then the next department हाँ ये वाला they have all the documents, they can do perfectly well. So then the last mile delivery is established. The other departments will also transfer the funds to the community. We know, we have reviewed, you have good documentation. Go ahead. So that is our idea. रिव्यू तो करते जरूरी और सर है, इसमें तभी वो एक और फायदा हम ये भी ऐड करना चाह रहे थे, जैसे बिल्स की बात हो रही थी सर, बिल्स का बात हो रहा था कि वो पक्के बिल्स नहीं होते उनके पास में, हाथ से लिखे हुए होते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का। हमारे मैम एसएचजी के ही एक जो है मेंबर, उनके हस्बैंड वो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सरस मेला में एसएचजीज आए, नॉट ओनली ऑफ आवर स्टेट, दूसरे स्टेट से भी आए, उनके पास बिल्स नहीं थे, तो हमने इनको कहा आप सारे में घूम लीजिए, जिनके पास भी बिल्स नहीं है उनके बिल बुक आप बना के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मेला, 10 दिन का मेला है, आप उनकी बिल बुक्स उनको बना करके दे दीजिए। तो उनको ये प्रमोट करते हैं कि जिनके पास नहीं है वो बिल बुक्स अपनी छपवाएं, ताकि जब वो प्रोसेस में आए। You reminded me of good this one. See, these formats, the request for quotation format, ये वाला guidelines में है। If you wish, like वो पहले SG का वो वाला आप प्रिंट करके देते थे, जो टीयरिंग करके उनको देने के लिए। You can also consider एक बुक उनको प्रिंट करके दे दो, request for quotation का फॉर्मेट है, purchase order का फॉर्मेट है, just they have to fill up ये वाला फॉर्मेट, tear it off, वो करके, that is also possible. वो you could also consider that. Okay, so this now we come to the questions कर हुए थे पहले, then we come to that करते हैं ना फिर आप रोकोगे। Sir, it's a technical question regarding the finance aspect. I am just finance expert, sir. Okay. Sir, there is any ceiling limit of payment of cash, because as per the income tax section 40 is clearly mentioned up to the 10,000 we will pay in the form of cash. But as per there is a procurement part, if there is any ceiling limit, we have to pay the party, because we are working in a rural section. So most of the payments we are in labor person do in the form of cash. So there is certain limit. Yes, that means गांव एरिया में विलेज वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, everybody is adopting Paytm, UPI. Sir, we are just, this is a way of transfer the money, but because as per the income tax is clearly mentioned, if you wants to pay payment to a certain person up to 10,000 rupees, so shall we carry forward it here? नहीं, देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट का 2000 से ऊपर है, 2000 तक कर सकते हैं, 2000 से ऊपर आपको जो टैक्स पेमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट का। Okay. So that is the financial management का जोशी जी बताया। If they want to transfer उनका अकाउंट से लिंक किया हुआ एक UPI से वो ट्रांसफर करते रहे। Any further questions? Last chance. कोई क्वेश्चन? सब क्लैरिफाइड हो गए? बस ठीक है। वीरेंद्र जी आप नोट कर लो, अगली बार सुपरविजन मिशन में जाएंगे तो गौतम को पकड़ेंगे। So thank you for your kind attention for all the listeners. Me and Dr. Virender would like to thank REAP Project Director Ms. Nikita Khandelwal for organizing this event, and also for all the participants actively participating in the discussion and the question and answer session. We also realize this is the first step, because many of them, the district officers,
it is the first time they are interacting or discussing about the procurement principles. Some of the document, all the document discussed here or will be given to you as a USB. Even if you don't have a procurement responsibility, go through it at your leisure and take it. Only when you practice, you will have some problems, practical problems, what are the issues coming up. That you could escalate it to PMD. Then, next time if you have something for a procurement training workshop or anything of that, it will be only for the procurement persons. Because then we can go deeper into the evaluation nuances, evaluation document. So this is just an overview on the legal framework. If you want to go into the procurement field, you are very welcome to read through all the one. There are online courses available, you can get that. Right? Next time, read, it will be a very focused only for the procurement staff training. And then, in that training, it will be a longer duration training. So, we will not discuss about the basic principles. Directly we go to the how to do that, what are the problems, that way. So, we hope this training was useful to all the participants to give you a procurement idea. So, we thank all the participants for that. I hand over to A big round of applause for Sriram sir and Dr. Virendra sir. Thank you very much. Actually, when we saw the list of participants, that time itself we decided that we should go from ABC only, so that you have perfect idea about the procurement. And as Mr. Sriram said, we never wanted to go into how to prepare the bid documents, etc. from scratch. That will be done by the procurement people. But you have to understand, since you have to manage the procurement, you have to understand each and every aspect from a broader view. So that's what we try to do, and in fact we have been very happy for your very active participation, and that also encourages us to have more interaction with you. And in fact we really thoroughly enjoyed being with you for last 3 days. Thank you very much. बहुत धन्यवाद के साथ बहुत आभार श्रीराम सर और डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग सर का। मैं इनवाइट करूंगी हमारी पीटी मैम को, रिस्पेक्टेड पीटी मैम को, आपके बहुत ही बहुमूल्य उनके लिए इनपुट्स के लिए और हमारे लिए इंस्पिरेशनल वर्ड्स के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये 3 दिन का प्रोक्योरमेंट वर्कशॉप मेनली एक जैसे कि सर ने बताया प्रोक्योरमेंट का बेसिक आइडिया के लिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली वांट टू थैंक officials from EFAT, Sriram sir and Garg sir, for being here and sparing your time. And I think जब I know कि when you're imparting a particular training, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ repetitive होते हैं, but keeping that patience, that cool and that vigor also कि उसको उसी vigor के साथ explain करना is also commendable. So thank you so much sir कि आप लोगों ने वो time हमारे participants को दिया उनकी queries और उनके issues के लिए. And I would also want to thank the staff from Odisha, the officials from Odisha, and I hope that they had a pleasant stay here and they also had an engaging sessions. We would look forward for more such interactions and cross-state interactions because there's so much to learn. एक दूसरे के स्टेट से कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस है जो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ की कोई अच्छी प्रैक्टिसेस जो वहाँ कर सकते हैं, तो ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन दैट रिगार्ड, तो हम लोग हमेशा लर्न कर सकते हैं. एंड एट द एंड आई आल्सो वांट टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो लोग हमारे दूरस्थ जिलों से आए हैं. तो सब लोगों ने अपना टाइम निकाला, एंगेजमेंट दिया, बिकॉज आई नो बार बार ट्रैवल करना. पिछले महीने हम लोगों ने आप लोगों को स्टार्टअप वर्कशॉप्स के लिए बुलाया, फिर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट वर्कशॉप के लिए बुलाया, तो आई नो ट्रैवलिंग है एंड देन यू हैव टू गो बैक टू द डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल. तो मेरा रिक्वेस्ट बस आप लोगों से यही है कि जो भी हमारे यहाँ के टेक अवेज हैं, सो उनको प्लीज ट्राई टू जॉट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट. प्रेजेंटेशन सब कुछ आपके पास है,
there's some things which you want to add it down, वो लोग आप लोग करिए, and also do share it with your with the NRLM staff there. मतलब our district mission managers and DPMs are here, but since हमने assistant manager accounts कुछ बुलाए थे, तो I would कि learnings होती हैं, there can be more queries, उनके भी कुछ questions निकल के आ सकते हैं, तो वो queries भी आप लोग हमेशा route कर सकते हैं to PMU. And I also want to thank Upasak and USRLM for their engagement in the session, because REAP is that project जो हमने startup workshop में देखा था कि वो 3 घोड़े हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और 3 घोड़ों को हमें एक डायरेक्शन में लेके जाना है. So UGVS, USRLM and Upasak are those 3 horses which have to move together to make REAP a successful project. And we are in the first year of this project, and this project is for 7 years. And REAP is something जो मैंने startup workshop में भी बोला था कि वो project हमारे this project for our state is a landmark project, कि अगर हमने ये opportunity miss कर दी तो हम आगे के लिए कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि हमारे स्टेट में डेवलपमेंट क्यों नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट वी हैव इन आवर स्टेट नाउ, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने जितने भी ग्रामीण परिवार हैं जो 5,60,000 REAP का टारगेट है, कि उन ग्रामीण परिवारों को हम लाभान्वित करें. और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी बहुत पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने का टाइम ये प्रोजेक्ट के थ्रू है. And I want to also tell the officials from IFAD that our rural development minister and our honorable CM, when they take the review of the RD department and they ask what is it that we can achieve, say what is our vision for 2025, what is our vision for 2030. So we all tell them that this is the project which actually is going to change the rural landscape of the state. So यहाँ पे और ये project, because it requires a lot of synergy between the 3 leading departments of Department of Rural Development. So I know that this project has that potential, and with all the vigor and the enthusiastic and the encouragement and the I see in the participants, मैं आप लोगों में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि yes, we can actually make it work. So this is the time for us, this is the golden opportunity for us. क्योंकि जब ILSP आया था तो शायद इतना ज़्यादा फोर्स ही नहीं किया था, but जब सक्सेसफुल मॉडल हुआ ILSP का और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा हुआ, तो then the project and the IFAD decided let's implement it in the entire state. So this is the time that we can do it. This procurement workshop के लिए per se मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, it is a very sensitive and critical field. If it is done right, then things will get in place. If it is not done right, then things will just fall apart. तो हम सोचते हैं, because there are n number of things, बहुत सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट में, but सब कुछ स्टार्ट होता है हमारे जब नीड आइडेंटिफिकेशन होती है, सब कुछ कि हमें कैसे चीजों को ऑनबोर्ड करना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट हाउ वी मैनेज आवर थिंग्स एंड हाउ वी फोरसी. हम कैसे अपनी प्लानिंग को करते हैं, हम कैसे चीजों को एनविजन करते हैं कि मुझे ये काम करना है तो मुझे कैसे करना है, ये काम करना है तो किसके थ्रू करना है, ये काम करना है तो क्या तरीके होंगे, ये सब कुछ वो है. So when we are planning for a procurement plan, जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट्स में करोगे या प्लान करते हैं, तो वो सब कुछ उसमें आ जाएगा कि मुझे ये कंपोनेंट करना है तो ये इसके क्या इम्प्लीमेंटिंग स्टेप्स होंगे, इन स्टेप्स में मुझे क्या क्या प्रोक्योरमेंट करना है, इन स्टेप्स में मुझे किस को लेकर आना है. तो वो सारी प्लानिंग हमें आज इस लेवल पे करनी है. सो आई वुड वांट कि going back to the districts, आप हम लोग वही चीज को प्लानिंग करें. I will just slightly digress from the procurement workshop, but just want to have this opportunity to discuss and interact. कि अभी हम लोगों ने DPMs और DMMs के साथ नहीं करी, DPMs के साथ बात करी थी regarding our ultra poor package. तो इसके लिए पहले I thought कि हम लोग procurement workshop में एक सेशन करेंगे छोटा सा, but we will not do that. We are still discuss with the support mission. और नेक्स्ट वीक में हम लोग इसके लिए आप लोगों के साथ एक पीसी करेंगे DMMs एंड DPMs के साथ, ताकि हम लोग अपने अल्ट्रा पुअर पैकेज को भी जो हमने सोचा है रोल आउट कर दें. एंड दिस टाइम द डिसीजन व्हिच वी टुक इन द लास्ट विद द लास्ट मिशन वाज दैट आवर पैकेज विल नॉट गो एज अ ग्रांट, इट विल गो एज एन इंडस्ट्री लोन थ्रू आवर CLFs. तो ये दिस इज अ डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन. इसके ब्रॉड इंप्लीमेंटिंग स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक की virtual meeting में share करूंगी, and I would request all the DMMs to please be part of that workshop. So time and again I would again want to repeat this, that REAP is not just about that UGBS has to do it और ये इनका है और उनका है. REAP is about UGBS, USRLM and Upasak, and I would want all these three offices to go in line and synergy, and all of us have to work with that synergy. And again, I would want to thank Sriram sir and sir for sparing the time. I hope you had a pleasant stay in Dehradun.
एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू उत्तराखंड। अब आपके हमारे सारे डीएमएम्स भी आपसे परिचित हो गए, सो उनके बेहाफ में मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि डू हैव अ विजिट इन ऑल दैट डिस्ट्रिक्ट्स, एंड उत्तराखंड इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, सो एंड लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर आल्सो देयर, सो वी वुड रिक्वेस्ट दैट कि आप लोग फ्यूचर में भी आए, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू Durisa Gaidwal. थैंक यू सो मच मैम आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए और आपके इस पूरे एफर्ट को कराने के लिए। मैं अभी सभी की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से हमारे लर्नेड गेस्ट का बहुत धन्यवाद करते हुए हम आप सबका थैंक यू लंच के लिए।